Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman, teacher of biology at Absex Madam. Today we are going to discuss a new topic, and that is homeostasis in humans. Like plants, humans are also capable of homeostatic mean maintaining the internal and external balance of the body, and that is due to specific organs, and the organs that is involved in the maintaining and balancing of the body are known as homeostatic organs. There are three major homeostatic organs in human body, and these are the lungs, skin, and the kidney. So how does it helps? lungs Lungs remove carbon dioxide from cells during respiration. Carbon dioxide diffuses into tissue fluid and from there into the blood. Blood carries carbon dioxide to lungs from where it is removed. It is as simple as we have discussed in the breathing that lungs are one of the homeostatic organs that help in the elimination of waste product. And one of the waste product is carbon dioxide. Carbon dioxide is a byproduct of cellular respiration, and it is produced during the process of respiration, and it is removed with the help of the lungs through the process of breathing. So one of the homeostatic organ is this, and it helps in the balancing of the gases inside the body. Another important organ is skin. Skin is actually a thermoregulatory organ, and it helps in the regulation of temperature, but it also eliminates some waste product like salts. Skin perform role in maintenance of body temperature of the skin and remove excess water. Skin consists of two major layers, that is epidermis. Epidermis is the outer protective layer which does not contain any blood vessels or nerves, while dermis is the innermost layer of the skin, and it is actually a living layer, it containing blood vessel, nerve ending, sweat and oil glands and other fat cells. So this is the structure. These are the sweat ducts through which the sweat is eliminated from the body, and these are the sweat glands, and these are the blood vessels. How does it work? The sweat gland extracts sweat from the blood and passes it up to the duct to the skin surface where it evaporates. Sweat glands are actually a specific organ of the body which help in a secretion. So one of the secretion here is a sweat. Sweat is actually a waste product of the skin, and it is produced in the process of perspiration. When we are get heated, so body produces sweat, and this sweat consists of a salt as well, and it is eliminated through this duct from the skin, and then it is removed from the body. Skin also help in maintenance of body temperature. How? It helps in maintenance of body temperature. When we get heated, it cools the body, and when we get cools, it warms up the body. Means that it maintain that temperature. The temperature that is the optimum range is 37 degree. It does not allow us to be increased or to be decreased in the temperature range. Vasodilation. Look at the term vasodilation. Vaso is actually derived from the vessels, and dilation mean widening. So what is this? If the body temperature rises, the blood vessel in the skin dilate and allow more blood to flow near the surface. The heat lost from the blood through the skin helps cool the circulating blood. Means that when we are get heated, so the blood vessels in our body are widened, they are dilated because that it allow more and more blood to flow, and the flowing blood also carry that heat. And so we get heated, we lost a lot amount of heat, and as we lost the heat, we are get cooled. Like one of the best example is the sweating. When we are sweated too much, and so after that sweating we feel cool. There is a cooling effect in our body, and we feel a little shivering effect, and this is actually that cooling. And during that shivering effect, this is actually the maintenance of that temperature to the normal set point. Vasoconstriction. If the body temperature falls, the blood vessel in the skin constrict. Less warm blood flows near the surface, so less heat is lost. And when the body is not that much heat, it means that it is cooled, so the blood flow and the vessels constrict. Less blood flow,
so least heat is lost and the temperature is maintained. Kidneys. One of the major homeostatic organs are actually the kidneys. Kidneys filter excess water, salt, urea and uric acid from the blood and forms urine. After that purification, elimination of water, salt, uric acid, etc., the blood forms urine. And because of this, it is also known as the urinary or the excretory system. The urinary system or the excretory system is actually consists of the kidneys. It is also called the excretory system. It is formed of a pair of kidneys, ureters, urinary bladder, and a urethra. There is a pair of kidneys. There is a pair of kidney in humans: a ureter, a urinary bladder, and a urethra. The kidneys are the major homeostatic organs, and ureters are actually the tubes that carry the urine from the kidneys to the bladder. And the bladder is actually a sac-like structure which is used to store the urine for a specific time period. And urethra is actually a tube that used to eliminate the urine from the body. Kidneys filter blood and produce urine. The ureters carry urine to the bladder where it is stored for a period of time and eliminates through the urethra. What is the structure of kidney? A pair of kidneys found in the abdominal cavity of humans. Kidneys are found in the lower abdominal cavity near the diaphragm. The structure, they are dark red bean-shaped organs. Kidneys are actually a bean-shaped organ and having a concave structure. Each kidney is 10 centimeter long, 5 centimeter wide, and 4 centimeter thick. This is the average. This is the average size of each kidney. They are protected by the last two ribs. The left kidney is a little higher than the right, and it is because to accommodate the liver. There is a depression in the kidney called hilus. There is a concave. The shape of the kidney is actually concave, and in the concave structure there is a hollow space. There is a deep depression, and that depression is actually known as the hilus. And hilus is actually the part where the blood vessels enter and leave the kidney. Here is the structure. This is the kidney, and this whole structure, this is known as the renal capsule. And this is the dissection of the kidney, mean the internal structure of the kidney. This part is known, the kidney consists of a two part, and that is the renal capsule and a renal cortex. So renal capsule is actually the outside structure that it containing all these. Renal cortex, this is the internal structure. This part is known as the renal cortex. These structure, the pyramid-like structure, are known as the renal pyramid. This part is known as the renal medulla, and this area, this is known as the renal pelvis, where all the urine accumulated here and then transferred to the ureter, and this is the ureter, and it is connected to the bladder. These are the blood vessels, renal vein and renal artery, through which the blood from the heart enters into the kidney, and then from the kidneys into the body, and then back into the heart. Nephron. What is nephron? The basic structure and the functional unit of a kidney is called nephron. There are 1 million nephrons in each kidney. There are two parts of a nephron. A nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. A renal corpuscle is further divided into two parts, and this is the glomerulus, which is a network of capillaries, and Bowman's capsule or glomerular capsule. It is a cup-shaped structure that encloses the glomerulus or the capillaries, while the renal tubule is further divided into the PCT, means proximal convoluted tubule, LH loop of Henle's, DCT distal convoluted tubule, and CT means the collecting duct. Function of kidney means the functioning of nephron. The main function of kidney is urine formation. As we are discussing the excretory system, so are the urinary system. So the function of the nephron or the function of the kidney is actually urine formation, and when the urine is formed, all the waste product are removed in the urine, so that is why it help in the maintenance or the homeostasis in the body.
It is completed in the following three steps. The formation of urine consists of these three steps: pressure filtration, selective reabsorption, and tubular secretion. What happens in the pressure filtration? During pressure filtration, glomerular filtrate is formed. During selective reabsorption is actually the reabsorption of the not of the waste product, but the essential products that is reabsorbed from the other waste product, and it happens through active transport, osmosis, and then diffusion. Tubular secretion, it is actually the secretion of ions that used to maintain the blood pH, and the normal blood pH is from 7.35 to 7.45. What are the hormones? The hormones that are involved in the process of urine formation are antidiuretic hormone and aldosterone. Antidiuretic hormone is used to reabsorb water, maintain the level of water. Aldosterone helps in the reabsorption of salts, that is sodium, potassium, etc. Now, proceeding toward the structure of the nephron and how does it work, means that this is one of the uh, part of the kidney, means that this medullary and the cortical region of the kidney. The nephron is actually found in cortex as well as it is found in the medulla, means that half of the nephron structure is situated or located in the cortex, while the rest of the nephron is found in the medulla, and this is the structure. This is the renal cortex. So cortical nephron, the part or the structure that is found in the cortical region is known as the cortical nephron, and the other part which is found in the medulla is known as the medullary nephron. This is the structure of nephron. These are the glomerular capillaries, and this cup-shaped structure, this is known as the Bowman's capsule or glomerular capsule. These are two arteries. Apparent arteriole and efferent arteriole. Efferent arteriole is used to carry blood to the nephron, means that the blood which is transferred from the heart and to the kidneys is then transferred to the nephron through the apparent arteriole, and then it is filtered in these network, in these capillaries, and then it is transferred back through these apparent arteriole. This is the structure. This is the glomerulus. This is the glomerular capsule or the Bowman's capsule. Now what happens or how does it work? The blood from the heart is transferred to the kidney through a very high pressure through the renal artery. The renal artery is further divided into smaller and smaller branches known as the arterioles, and one of the arteriole is known as the apparent arteriole. The apparent arteriole carry that blood into the capsule and to these capillaries, means that the glomerulus. In these capillaries, the blood is transferred with a high pressure, and with that of the high pressure, it forces the waste product like salt, potassium, except for the proteins, it transfers each and everything to these Bowman's capsule, this area, and the remaining blood which is filtered is transferred back through the efferent arteriole. It is transferred. Now we are concerned with the filtrate which is transferred from that blood into this Bowman's capsule. मतलब ये है कि जब blood pressure के साथ आ जाती है इस network में, तो उस blood में जो भी substances present होते हैं, जिसमें water है, जिसमें salt है, जिसमें enzymes है, जिसमें hormones है, except for the protein, सब कुछ जो sugars है, सब कुछ इस कैपिलरी से ट्रांसफर हो जाता है इस कप शेप स्ट्रक्चर में बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर. बाकी जो ब्लड है वो इस एफेरेंट आर्टेरियोल के जरिए ट्रांसफर हो जाती है बैक इनटू द हार्ट. अब now we are concerned with that filtrate, and the filtrate or the substance which is transferred into the Bowman's capsule is known as the glomerular filtrate, and the filtrate is now transferred from this Bowman's capsule into the renal tubular of the nephron.
जो फिल्ट्रेट यहाँ इस वोमेन कैप्सूल में ट्रांसफर हुआ है तो इस एरिया से ये ट्रांसफर होता है बाकी जो पार्ट है नेफ्रॉन का, और वो कौन सा पार्ट है, जो रीनल टेब्यूल है, मीन जो टेबुलर पार्ट है। और उस टेबुलर पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। ये पूरा जो रीजन है टेब्यूल का, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। तो जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट इसमें ट्रांसफ़र होता है। जो फिल्ट्रेट यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है, उस ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट का वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होता है। मीन 99% जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होता है। उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है तो वो यूरिन में फिर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज़ द पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल में जो फिल्ट्रेट ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से ही रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे सिलेक्शन होती है डिफरेंट मटेरियल्स की, और वो डिफरेंट मटेरियल्स जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। अच्छा, अब जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर एंड जो शुगर है मीन ग्लूकोज, वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। और ये रीएब्जॉर्प्शन किसके ज़रिए, ये रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है। फिर यहाँ पे ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है, इस रीजन को कहते हैं लूप ऑफ हेनली। इफ़ यू रिमेंबर दैट LH, लूप ऑफ हेनली। तो यहाँ पे इस लूप ऑफ हेनली जो है ये क्या है, ये कंसर्न है किस चीज़ के साथ, लूप ऑफ हेनली जो है ये वाटर और ये साल्ट के रीएब्जॉर्प्शन के साथ कंसर्न है। लेकिन इस लूप ऑफ हेनली के दो पार्ट हैं। एक इसको देखें जो यहाँ से डाउनवर्ड मूव करता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लैम्प, और ये यहाँ से अपवर्ड मूव करता है तो इसको कहते हैं असेंडिंग लैम्प। जो डिसेंडिंग लैम्प है लूप ऑफ हेनली का, वो क्या करता है, वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है। जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ये ऑस्मोसिस के जरिए करता है तो बाकी जो साल्ट हैं वो भी ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं इनटू द असेंडिंग लैम्प। प्लस यहाँ पे अगर आपको याद है, टू एंजाइम्स हार्मोन्स आर यूज्ड फॉर द फंक्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, और वो यहाँ पे एक जो हार्मोन है वो क्या है, अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो एक्चुअली जितने भी हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम, वन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, अल्डोस्टेरोन वहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है जो कि कंट्रोल बाय द ब्रेन। तो इस हार्मोन का काम क्या है कि ये यहाँ पे साल्ट, पोटेशियम जो है, और जितने भी साल्ट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या साल्ट, बट मेजर अमाउंट यहाँ पे साल्ट और पोटेशियम का होता है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन इस हार्मोन के ज़रिए, इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में किसके ज़रिए हो जाती है, इस हार्मोन के ज़रिए साल्ट यहाँ से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है इनटू द नेक्स्ट ट्यूब, और वो जो नेक्स्ट ट्यूब है वो कौन सा है, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल है वो दोबारा क्या करता है, वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है। एंड द हार्मोन नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूज्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर, वो यहाँ पे वाटर की अमाउंट जो है वो मेंटेन करता है। अगर इस फिल्ट्रेट में वाटर बहुत ज़्यादा है तो ADH हार्मोन जो है वो और ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब करवा देता है। अगर फिल्ट्रेट में वाटर कम है तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। जितना ये ADH ज़्यादा प्रोड्यूस उतना वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, जितना ADH लेस प्रोड्यूस उतना रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कम होता है। इट डिपेंड्स ऑन द फिल्ट्रेट एज वेल। फिर इस फिल्ट्रेट के बाद यहाँ जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल है, यहाँ पे दूसरा ट्यूब होता है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये सब कुछ ऐसे आसानी से नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इट इज़ सराउंडेड बाय कैपिलरीज जिसको कहते हैं पेरिट्यूब। ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल, फिर PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल है, एफेरेंट आर्ट्रियोल है। ये पूरा जो रीजन है इसको देखे, ये सारा ये कैपिलरीज है।
तो इस कैपिलरीज में भी ब्लड मूव करता है और ये जो नेफ्रॉन है इसमें वो फिल्ट्रेट मूव करता है। तो जो हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो एक्चुअली यहाँ से होती है। ये जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, तो इस जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या जो अदर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, यहाँ से इस कैपिलरी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि कैपिलरीज आर जस्ट सिंगल सेल थिक दैट कैन अलाउ ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से सब कुछ की रीअब्जॉर्प्शन दोबारा हो जाती है। तो इससे वाटर है, साल्ट है या जो भी है वो इस कैपिलरीज में दोबारा ट्रांसफर हो जाती है एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द ब्लड, वो ब्लड के पार्ट बन जाती है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर कि यहाँ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाती है तो वो कहाँ पे जाती है, वाटर और ग्लूकोज जब रीअब्जॉर्ब होते हैं तो वो इस कैपिलरीज में दोबारा जाते हैं। कैपिलरीज में ब्लड मूव करती है, इट बिकम द पार्ट ऑफ दैट ब्लड। फिर ये जो लूप ओपन ली है, दिस इज द डिसेंडिंग लैम्प। तो डिसेंडिंग लैम्प है, यहाँ पर भी ये नेटवर्क है कैपिलरीज का। तो ये डिसेंडिंग लैम्प से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इस कैपिलरीज में जाता है, बिकम द पार्ट ऑफ दैट ब्लड दैट मूव्स इन दैट कैपिलरीज। असेंडिंग लैम्प है, असेंडिंग लैम्प यहाँ से वो ऑस्मोसिस के जरिए साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, दैट बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिलरीज एंड देन मूव्ड इनटू द ब्लड। अच्छा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। फिल्ट्रेट ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो ही जाता है। फिर एक दूसरा स्टेप है जिसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। वो ट्यूबुलर सिक्रीशन यहाँ इस कलेक्टिंग डक्ट में ही और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में ही होता है। अब यहाँ से क्या है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जब हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करते हैं तो जो ब्लड इसमें मूव करती है, ये जो कैपिलरीज हैं इसमें, वो ब्लड दोबारा अगर उसमें कोई आइंस है तो वो इसको क्या करती हैं, इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड या कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा वो सिक्रीट कर लेती हैं और उसके सिक्रीशन में स्पेसिफिकली आइंस होते हैं और क्रिएटिनिन होती है, यूरिया होती है, ये सब कुछ दोबारा इसमें सिक्रीट होती है, जिसकी यहाँ पर फिर एलिमिनेशन हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और ये इसलिए कि ये ब्लड इसको क्या कर सिक्रीट कर लेती हैं ताकि जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है उस पीएच को क्या करे, उसको मेंटेन कर सकें। तो बाकी जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो उससे यूरिन बन जाता है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये ड्रेन होता है कहाँ पे, एंड टू द pelvis। अगर याद हो कि जो द डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है इन द किडनी, इन दैट एरिया इज नोन एज द रीनल pelvis। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये ट्रांसफर करता है उस यूरिन को इनटू दैट pelvis और उस pelvis से फिर यूरेटर में ट्रांसफर